अरे यार चिल्ला रहे हैं तुम लोग सब लोग। विचार एक्चुअली राइट नाउ मैं एकदम नम हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी पहली स्क्रीनिंग हुई थी दिल्ली में, उसका इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था that I'm still like sort of catching my nerves, and I'm very excited and very nervous, and I really hope everybody enjoys the film. आपके लिए बहुत बड़ी बात ये है कि इस तरह का रोल करना, कई इसमें जो सीन्स डिपिक्ट किए गए वो भी एक करेज चाहिए होता है उनके लिए। How you take it? You know, this is a very important film for our society, and I think मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हो सकी हूँ, एंड स्पेशली औरतों के लिए। मैं एक मॉडर्न इंडियन लड़की हूँ, और जब आप फिल्म देखेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि ये औरतों के लिए, औरतों के हित में कितनी है फिल्म। बट बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि काफ़ी सीन्स हैं फिल्म में जो एज अ गर्ल मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ही हर्ट हुई थी। बट ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिल्म देखेंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे। बट या जस्ट एंजॉय द फिल्म। ट्रेड को बहुत अपेक्षा है इस फिल्म से, क्योंकि कुछ जो थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, आप लोगों की क्या अपेक्षाओं पे खरा उतरना आप लोगों को बहुत जरूरी है। सो आई रियली होप कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे। बट यू नो, द इंटेंशन बिहाइंड दिस फिल्म इज़ वेरी नोबल। हमने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही प्यार से ये फिल्म बनाई है, एंड मैं यही चाहूँगी कि जितने लोग हो सके हिंदुस्तान में उतने लोगों तक ये फिल्म पहुँचे, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी फिल्म है। कितने करोड़ एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? हाँ पता नहीं। Yes, I want to wish everybody a very happy Independence Day. We are a very young economy, we are a very young democracy, and together we need to strengthen our country and go forward and turn it into the amazing country that it is. A very happy Independence Day. आप कितने फर्स्ट डे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कलेक्शन? So honestly मुझे कलेक्शंस वगैरह समझ ही नहीं आती। सिर्फ मेरी दूसरी फिल्म है, मेरी पहली फिल्म एक छोटी सी फिल्म थी, so I don't know. I really hope जो भी फिगर्स होते हैं वो टॉप ही हो। 15 से 20 रखे हैं आप लोग? क्या आपका जो मन करे आप रख लो। आई थिंक सो, जी जी, ही इज ऑन हिज वे। आई होप, हाँ वो आ रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो एक्चुअली पहुंचने ही वाले होंगे। अब उनसे पूछेगा आपको क्या लगता है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सर। अरे सवाल तो पूछने। So what is that one thing you want to do from personally or professionally? Personally or professionally, I think the only thing that I would see, I mean, I'm being very honest, I'm very lucky. I come from a family where we were given freedom at every level, but I really hope that the inequality that women face in our country, that if slowly and steadily diminishes. Definitely today that's the kind of freedom we need in our country. About your look, I am yes, I'm मेरी बहुत ही बढ़िया स्टाइलिस्ट है आस्था शर्मा। मैंने थिया का आउटफिट पहना है। आप पूरी एक्सपर्ट हो गई, प्रो हो गई। कमेंट्री चलती रहनी चाहिए, बोलते रहिए, क्या पूछना है आप सब? जो आप ड्रेस हमारे बता रही Hi. It's always Arman. I know, it's always Arman. Hi. Anya, Thank you so much. congratulations. Thank you so much. Yeah, please finish your bites and I'll see you. Okay, for sure. कैसे हैं आप? Good Good evening. evening. फर्स्ट प्रीमियर Yeah, Yeah. officially. कुछ दिनों में आपकी फिल्म का भी प्रीमियर होने वाला है,
जी जी 25 अगस्त को अगस्त को प्रीमियर हाँ प्रीमियर बिल्कुल Very nice concept, probably a message also. Definitely. Your thoughts? Definitely, I think it's a very educational film. Films like this should be made, and it's being made. We're just very excited to see it now. and it deals with the social cause which is very important so बिल्कुल। it's a good thing about बदलाव आ सकता है फिल्मों के जरिए जी ऑफ कोर्स ये फिल्में एक बहुत बड़ी मीडियम है जिससे आप लोगों तक पहुंच पाते हो तो आई होप दिस मेक्स अ डिफरेंस जी बिल्कुल. Yeah, for sure. I mean, films are such a big platform to entertain people, to spread a message, spread a word. So I think with this film, definitely it could touch a lot of people. And I hope it does. You know, it's a and honest creates effort. awareness also. Definitely, it's an honest effort by Prerna, Arjun, Akshay sir, the entire team. I hope people come and watch it, and I'm sure do very well. Thank you, Ji. Of course, definitely in such a great place like India, you have the freedom of everything, the freedom of speech, to do what you want, to wear what you want, and it's a great time to be in India. And we must value it and that is बिल्कुल. what our movie is about. Yes. So value हमारे your पिक्चर का freedom. मुद्दा है ये, to value your freedom, not take things for granted. So yes, very excited for Independence Day. Sir, you two are about to film industry में already काफी competition है, lot of good actors, lot of young actors. So do you have like anything planned for you that I'm gonna go this way? And like, how are you planning to achieve what you want? So right now, because my film is just coming out, I'm very excited about it. I haven't thought much about any competition, but yes, I do think that competition is healthy. It motivates you to do better work and encourages you and pushes you forward. तो देखेंगे आगे जाके. I feel the same way. We're so new. Sorry, I feel the same way because हम इतने नए हैं, कुछ planning नहीं किया है, and healthy competition always enhances your performance and art. I feel so. It's a good thing to be. Of course, in some ways, but we're too new to be scared. We're very excited about the entire journey right now. Thank you. Thank you. Happy 70th Independence Day. Happy सभी को. Independence Day, सबको. Thank you so much. Thank you so much. Thank Jai you. Hind. Jai Hind. Hi. Good. Tell me. Okay, Pooja, have you seen the promo and how it? I'm very excited to watch this movie. It's such a different concept. Nothing like that has been done before. So बहुत ही excited हूँ. हाँ? I think कि एक तो ये message तो there'll definitely be a very strong message, but at the same time I think कि इसमें humor भी there's going to be great content in terms of humor. So I think I can answer this question better after I watch the movie. Good evening. Correct. Yes. Oh my God! Why you ask these questions, Hasu? Yeah, I mean, in terms of it was a South film. It was a Telugu movie and it had a Eid release and it did really well. In fact, in its first week, I think it made 104 crores, which was massive. So it always feels good to have a success, whatever the language may be. No, we didn't even look at it that way. I'm just glad people enjoyed the film.
हाँ बोलिए। ऑफ कोर्स हम एक ऐसी कंट्री में है जो इन अ वे वी स्टिल हैव आवर फ्रीडम, एंड आई थिंक फ्रीडम इज आल्सो अ स्टेट ऑफ माइंड, यू नो, so of course you can always better your country, but I do feel free, of course. ऐसे कुछ नहीं, I think it is more mental, you know, rather than a physical thing. So sometimes, you know, when you think too much, that also can hold you down. So I guess, you know, I want to think lesser. Yes, I want to wish everyone a very, very happy Independence Day. Thank you. Jai Hind. जय हिंद।